So let's just get right into it. Umaid bhai, let's go back a few months. I think मार्च की बात है या आई थिंक मार्च की ही बात है. और उससे पहले अगर थोड़ा सा हम चले जाएं तो डेवलपमेंट्स आ रही थी पाकिस्तानी फुटबॉल में. तो फॉर पीपल हु माइट नॉट नो स्टिल, मैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि कुछ साल, 1 साल और कुछ महीने पहले जो फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए इन जो है वो लगाई हुई थी, उसके हेडक्वार्टर्स पे टेक ओवर हो गया था. और उस टेक ओवर के बाद फीफा ने हमारे हमारे पे सस्पेंशन लगा दी थी एंड ऑल लेजिटिमेट सॉर्ट ऑफ फुटबॉल ऑपरेशंस जो फीफा बैक थे या जिनका फीफा का मैंडेट था वो ख़त्म हो गया. और अनफॉर्चुनेटली तब से लेके अब तक फीफा मैंडेटेड इवेंट या फुटबॉल एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं हुई एंड पाकिस्तान इज सस्पेंडेड बाय ऑल, यू नो, लाइक बाय ऑल अकाउंट्स. तो उसके बाद वैद भाई रिसेंटली अगर आप व्यूअर्स को और हमें बताना चाहेंगे कि डेवलपमेंट्स किस तरह हुई, जो गवर्नमेंट के एंड से हुई, आईपीसी मिनिस्ट्री की तरफ से हुई, और मामलात अभी किधर खड़े हैं. ये प्रोग्रेस तो काफी हुई विद द लास्ट गवर्नमेंट. आईपीसी मिनिस्टर की सपोर्ट की वजह से ही, जो फॉर्मर आईपीसी मिनिस्टर रादर, उनके सपोर्ट की वजह से ही पीएफएफ हाउस वापस मिला एनसी को. बट the condition for the ban, as it was before, is okay, it will only be lifted when everything is back with the NC. NC के पास अभी तक अपने बैंक अकाउंट्स नहीं आए हैं, and it is because NC ने एक स्टे लिया था after the takeover of the FIFA house. तो वो स्टे वेकेट कराने के लिए फिर हियरिंग्स चल रही है उसकी. The government has changed. Unfortunately, the NC has so far not met with the new government or the new IPC minister in any way to try and expedite this thing. Football, of course, जैसे सफर कर रही है वैसे सफर करे जा रही है. So yeah, we have to wait and see when things get sorted. Let's, I think it's good कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें तो डेवलपमेंट्स जो हुई थी वो, व्हाट आई वांट टू नो इज, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी इसका फायदा होगा कि काफी महीने वैद भाई ये बैन रहा और काफी महीने हमें यही सुनने को मिला था. और इनफैक्ट मैंने इस पे काफी पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे कि टेक ओवर जिन लोगों ने किया था उनके अंदर कुछ हुकूमत के लोग थे, राइट. सो पीटीआई बेस्ड लोग थे उस टेक ओवर वाले ग्रुप के अंदर. एंड फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस कुछ महीनों तक, स्पेशली इस साल के एंड तक, सॉरी पिछले साल के एंड तक, हमें यही देखने को मिलता था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई समझ लें इंटरवेंशन नहीं थी या कुछ भी नहीं था. बट सडनली इंटरवेंशन हुई गवर्नमेंट की तरफ से और उनको जो जो अशफाक शाह ग्रुप था विच हैड टेकन ओवर द पीएफएफ हेडक्वार्टर्स, उनको निकाल दिया गया वहां से. तो ये किस तरह, व्हाट चेंज्ड, गवर्नमेंट एकदम से क्यों इंटरवीन करना शुरू होगी और अपने जो उनके खुद कुछ लोग थे उस पार्टी और या उस ग्रुप के अंदर, उनके बावजूद वो ये स्टेप एकदम से क्यों लेना शुरू हो गए? वो व्हाट्स द स्टोरी देयर? So well, basically what happened was that the government had been asked like way back around April के मार्च अप्रैल के जी एनसी के साथ इसको बहाल किया जाए. Problem is के the government wanted guarantees from the NC, which was an election roadmap, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था to kind of like have everyone at ease कि जी election इस time frame में हो जाएगा. और government wanted some guarantees. government को FIFA से बात करनी थी regarding this whole thing, and it took time of course क्योंकि इन सब चीज़ों में in high level talks में time लगते हैं. So once that happened and then अशफाक शाह का जो ग्रुप है उनको पीएफएफ हाउस से बेसिकली तो उनको लाहौर रेवेन्यू बोर्ड ने निकाला था. क्योंकि वो जब पीएफएफ फैसल सालेहात साहब के टाइम पे थी तो उन्होंने एक बिल्डिंग का पोर्शन रेंट पे दिया हुआ था which was not allowed in terms of the lease agreement. तो बेसिकली उस पे उनको निकाला, but still took months and months before the NC finally got it.
Yeah. They were out in November, but NC, I think they got it in March sometime. Yeah. So Yeah. yeah, it still took like 5 months for या the और आई house थिंक ये जो to टाइट get back. टर्न हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स बिकॉज आई रिमेम्बर अशफाक शाह ग्रुप ने जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग वो करा रहे थे वो अपनी इस्लामाबाद लेग उनकी ख़त्म हो रही थी और पेशावर लेग शुरू होनी थी और उसी के बीच में ये सब जो है टाइट टर्न हुई एंड इट वो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि दे कुडंट कैरी ऑन विद देयर लीग वो पेशावर लीग उस पाकिस्तान Absolutely. प्रीमियर लीग की हो ही नहीं सकी और वो अब वो लीग खत्म हो गई आई मीन वो हुई नहीं उसके बाद जहाँ पे थी वहीं पे रुक गई एंड सो ऑब्वियसली लाइक यू आर सेइंग कि काफी महीने लगे हैं सबको होने में बिफोर आई गो ऑन टू कि अब क्या सूरत हाल है अब और महीने गुजर गए हैं अब हम ऑलमोस्ट जून 2022 में जाने लगे हैं अब मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि अशफाक शाह ग्रुप का क्या स्टेटस है हाउ आर दे टेकिंग दिस उनका उनकी तरफ से अगर कोई डेवलपमेंट है या उनके इसके बारे सबके बारे में क्या ख्याल है व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ बेसिकली अशफाक शाह ग्रुप ने एक केस किया है और ये आई थिंक द न्यूज में थोड़े दिन पहले रिपोर्ट हुआ था कि what they're trying is they want the court to give an order in which it is stated को NC को इस टाइम फ्रेम में इलेक्शन कराना है. I think right now they are like कि भाई इलेक्शन करा दे and everyone wants an election and as soon as possible. जब तक वो होगा नहीं ये मसले जारी रहेंगे पाकिस्तान फुटबॉल में. So yeah, that is the thing क्योंकि देखें एनसी के जो रुकन हैं शाहिद खोकर साहब उन्होंने बड़ी मेहनत की है ड्यूरिंग दिस टाइम टू गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड कि जी हम इलेक्शन कराएंगे एंड द मोर इट गेट्स डिलेड बेसिकली लोगों का जो ट्रस्ट गेन हुआ है विद द एनसी दैट that starts to dwindle with it's every money in passing the day. bank so obviously with time it will Yeah. devalue तो yeah बेसिकली जब तक वो होगा नहीं आई मीन दे हैव गिवन एन 8 month रोड मैप तो क्योंकि मसला ये है ना कि ना एवरीथिंग स्टॉप नाउ फुटबॉल इज स्टॉप फुटबॉल इज लिटरली लाइक इट्स कम डाउन के प्लेयर्स अब कह रहे हैं कि जी हमें नहीं फर्क पड़ता कोई भी हो बस फुटबॉल होनी चाहिए एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इट शुड हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट अनफॉर्चुनेटली अब इट्स कम टू अ हेड कि भाई अब प्लेयर्स भी आजिज आ चुके हैं with the whole thing in Pakistan football. And I tried to message the PFF NC chairman quite a lot of times उनसे पूछने के लिए कि जी आप कब last time PFF house पे थे. From my sources he's not been here since the end of May, end of March. सही है तो मतलब it I mean right now if you look at the NC it's actually working without its head and उस पे आते हैं I don't know how उस पे उबैद भाई आई वांट टू कम टू दैट बट बिफोर दैट यू आपने एक दो जरूरी बातें मेंशन की हैं इलेक्शंस और रोड मैप के हवाले से 8 month रोड मैप की आपने बात की अशफाक शाह ग्रुप और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इलेक्शन चाहते हैं तो मसला क्या है 8 month रोड मैप में बिकॉज क्लब स्क्रूटनी और जो ये आई थिंक आपने ही मुझे बताया था पॉडकास्ट पे ही एक पिछली जो हमने की थी कि फीफा आल्सो वांट के स्टैट्यूट्स में जो है वो चेंजेस आए ताकि ये बार बार वही मसले ना आते रहें तो उस सब के अंदर तो थोड़ा टाइम लगेगा सो अनलेस के अशफाक शाह ग्रुप और या basically now the thing is now that the NC has already given a roadmap now it cannot go back and change it I mean तो रोड मैप मिल गया तो फिर अशफाक शाह ग्रुप कोर्ट में क्यों गए हैं मतलब पता तो लग गया 8 महीने हैं तो अब क्या मसला है 8 महीने उन्हें करने दो अभी जो है जो कोर्ट में जो मेन मसला रुका हुआ है ना वो है अकाउंट्स का जिस दिन उसमें अशफाक शाह ग्रुप की वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है दे हैव फाइल्ड अ केस दो रिगार्डिंग एक प्रीवियस वो जो डिसमिस हो गया था व्हाट दे वांट इज कि देखें जो मुआहदा हुआ है वो पिछली गवर्नमेंट से हुआ है पिछली गवर्नमेंट अब है नहीं एनसी का जो लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा है लोगों के लिए कि जी एनसी ने दे तो दिया है लेकिन क्या पता वो 8 महीने में ना कराएं तो वो ये चाह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर दे दे वो बोल रहे हैं कि कोर्ट अगर
बोलेगा कि 2 साल में भी इलेक्शन हो तो हम 2 साल में ही मानने के लिए तैयार हैं, बट शुड बी अ कोर्ट ऑर्डर। एक सेकंड, वैसे इसके अंदर मेन सवाल ये उठता है कि बात वहीं पे आ जाती है लीगल इशू के, कैन कोर्ट, डज द कोर्ट, मतलब कोर्ट के पास क्या ये राइट है या क्या ये ताकत है कि वो फीफा, जो जिस दुनिया, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज करना है कि पीएफएफ जो है वो फीफा की दुनिया में रह रहा है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर नहीं वो ऑपरेट करा, मैंडेट उसका पाकिस्तान की पार्लियामेंट या उधर से नहीं आता, वो अलग एक फीफा के सिस्टम पे कर रहा है। तो क्या हमारे कोर्ट के पास ये मैंड एबिलिटी है या ये राइट है कि वो मैंडेट वगैरह चेंज कर सके या एनफोर्स कर सके इस तरह की कोई चीज कि देखिए, फीफा उसको लॉट ऑफ देखेगा? केस कोर्ट के पास वो पावर है। और अभी फ्रेश क्लासिक केस इंडिया का चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, जहां इंडियन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उनको एक वो बेसिकली कंसल्टेंट बना दिया है उनकी एआईएफएफ को। एंड दे हैव अपॉइंटेड 3 मेंबर कमेटी जो एआईएफएफ के इलेक्शंस कराएगी, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस बहुत डिले हो रहे थे। तो ये फीफा इज ओके विद दिस? फीफा विल हैव टू फॉलो सूट, बिकॉज देखें, मुल्क टू कंट्री वेरी करता है। अभी तक फीफा को कोई जवाब आया नहीं है, बट द प्रेशर इज सच कि फीफा को वो मानना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे द प्रेशर इज बिल्डिंग एंड इवेंचुअली आई थिंक फीफा विल हैव टू रिलेंट। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि फीफा के जो स्टैट्यूट्स हैं और वो हैं, वो इस न्यू वर्ल्ड के हिसाब से ना बहुत पुराने हो चुके हैं। क्योंकि सेंस में? इन कंट्रीज लाइक साउथ एशिया आप गवर्नमेंट्स के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाके फुटबॉल डेवलप कर नहीं सकते। यस। It's simply not possible. मतलब इंडिया में whatever development came was because the IFF had the support of the government. तो बेसिकली फीफा दुनिया भर में गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है। फीफा ने, जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट है, फीफा ऑफिशियल ने उनसे भी बात करी। They understood that they had to work with the government. या It cannot be like you cannot, yeah, I mean, the जो इनका हैंड ओवर हुआ है उससे पहले जो आईपीसी मिनिस्टर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, शी हैड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कॉल विद फीफा रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एएफसी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो they agreed to come on the table because they do understand। या देखें, दुनिया भर में फुटबॉल, इवन अगर आप मिडिल ईस्ट देख लें या आप यहाँ देख लें, इट्स ऑल, इट हैज टू बी गवर्नमेंट्स। या ऑफ एंड कोर्स। तो मतलब इनको यहाँ पर अगर देखिए, हर किसी के पास लीगल रिकोर्स का ऑप्शन तो होता है ना। मतलब यस। आई मीन, एंड if Ashfaq Shah group is one group which is trying to do that, I think the rest of the groups also want a quick election. तो जहाँ तक statutes change की बात है, या I would say when the NC came, there was a lot of optimism and there was a lot of hope even when the new NC came कि जी चीजें right track पे आ जाएंगी। But at that time FIFA should have come out and spoken out कि जी हम ये mandate में include कर रहे हैं, not given it secretly. या And things if they were handled better तो वो बहुत अच्छा हो जाता। But Pakistan's been a disaster. It's an absolute disaster for the normalization committee and FIFA's normalization process. या फॉर श्योर। अच्छा, इसके अंदर उमैद भाई दो तीन चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि वो अशफाक शाह ग्रुप मतलब लीगल एक्शन ले रहे हैं कि इलेक्शंस का टाइम फ्रेम दिया जाए। ऑब्वियसली जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है बाकी स्टेक होल्डर्स भी उनके साथ होते जाएंगे। तो अब एनसी, जो आपने पहले वो बात की कि हारून मलिक यू रीच ट्राई टू रीच आउट एंड ही हैजंट बीन एट द पीएफएफ हाउस फॉर अ व्हाइल नाउ, तो उनकी तरफ अगर हम थोड़ा लाइक अगर अपना रुख मोड़े तो उनके अब क्या, what is their play, what are they doing? Definitely not doing anything or being inactive या गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट से बात ना करना is only going to harm them and their जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत सोशल या पॉलिटिकल कैपिटल अक्रू किया है। Absolutely does। मतलब देखें, अभी जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई तो the NC need to be on the ground. From what I know is the NC के members अभी जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, because of course जो बाकी members हैं they need to act upon orders from the chairman. अब
there are people who are trying in the NC, but I don't see a sense of direction in the NC where it wants to go and what it's planning to do. I mean, Why is that? मैं Why do you think that is? मतलब ये तो समझ से बाहर है ना बात। यहाँ तो काफी चीजें हमें समझ आ जाती हैं कि अच्छा ये फलाना बंदा या मतलब फलाना ग्रुप मैं इसलिए कर आपसे एक रहा है सवाल या पूछता हूँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आपने फीफा कनेक्ट आईडी का सबसे पहले कब सुना था? मैंने फीफा कनेक्ट आईडी का सबसे पहले सुना था आफ्टर द टेक ओवर एंड इट वाज मेंशन्ड टू बी मी बाय समवन। हाँ, तो फीफा कनेक्ट आईडी जब से आई हुई है उसका रोल आउट तो हो सकता था, बैन और नो बैन। या I mean, on a trial basis, it could have been done. यस It could have started, but it hasn't. मतलब मैं, I mean, what I always say is, I mean, you can say all you want, but if there is nothing on the ground or something that people can see, then it's all talk. मतलब जब से हम सुनने जा रहे हैं कि जी फीफा कनेक्ट आईडी ने आना है और ये होना है और वो होना है, but अभी right रिसेंटली now, मैं आपको अपना वो बता देता हूँ। मेरी बात हुई थी लाइक आई थिंक इट वाज द डे व्हेन द एनसी हैड देयर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस डीब्रीफ at the PFF house जब इनको वापस मिला है। I was present there. I did a podcast with Harun Malik उस दिन and he also talked about the FIFA Connect ID and you know what his plans are for the club structure, but उसमें he mentioned के फाइनेंशियल एसेट्स और बैंक अकाउंट्स लाना जरूरी है। उसके बाद से वी वर ऑल होपिंग कि उस पर कोई प्रोग्रेस होगी या कुछ होगा, बट आफ्टर रीडिंग योर स्टोरी इट फील्स लाइक देयर इज टोटल साइलेंस और कुछ हो नहीं रहा। सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? ये अब डेवलप किस तरह होगा इन योर लाइक इन टर्म्स ऑफ जो आपने माजी में देखा हुआ है, आपकी जो भी इंसाइट है, आपको कहाँ लगता है बात जाएगी हर तरफ से? यार बेसिकली आई मीन फीफा ने जब मुझे मैसेज किया कि वी हैव नो कमेंट, I was actually surprised. FIFA in the past has been very defensive about the NC, but this was something that FIFA was like, we don't want to talk about it, which is strange. FIFA doesn't do that usually. It usually backs its own appointed committee. वो मेरे लिए काफी स्ट्रेंज था। मैंने उनसे पूछा जी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी आ रही है पाकिस्तान, एनसी मेंबर्स होंगे वेलकम पे, एंड देयर वाज नो मेंशन एंड नथिंग, नो रिप्लाई। आई मीन दैट्स इट। what they said was just कि जी is this दिन आ रही है और क्रिश्चियन कैरम्बे और ट्रॉफी लेकर आएंगे। no mention of the NC, which is actually strange क्योंकि अभी वर्ल्ड कप ड्रॉ पे तो एनसी थी despite the ban, but now when the World Cup trophy is coming, the NC doesn't get a mention, which is strange. I mean, I don't know, but I think what I've seen and observed is that the AFC, the Asian Football Confederation, does not like the way the current NC is working, and there is a push for a change. So do you think because बीच में like this is an important point and हम उमैद भाई ने एक रिसेंटली आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर ही इज मेंशन्ड ऑल ऑफ दिस, जो भी डेवलपमेंट्स और या फिर जो डेवलपमेंट नहीं हो रही उसके बारे में, एंड विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट उसके अंदर हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज के वो फैसल साले हयात जो हैं एएफसी की बॉडी में, और आपके ऑब्वियसली आर्टिकल में मेंशन हुआ है कि वो अभी जो रिसेंटली जो उनकी वर्चुअल मीटिंग या जो भी हुआ है उसके अंदर ही वाज प्रेजेंट देयर एज वेल, तो उसका कितना रोल है एनसी के साथ फ्रिक्शन क्रिएट होने में? नॉट सेइंग कि हु इज डूइंग इट, बट इज दैट वन ऑफ द रीजंस? यार I met Faisal Saleh Sahab after 7 years, and we met in Doha for the first time in 7 years. He was there for the AFC executive committee meeting, और क्योंकि वो AFC के रुकन है तो he of course it does not depend on Pakistan wherever it is, because he is a member of the EXCO, तो वो AFC EXCO में भी और कांग्रेस में भी होते हैं। From what we spoke, and it was very like 5-minute short talk, and he told me that he doesn't see the NC holding elections. मखदूम साहब ने पहले भी AFC EXCO में बहुत दफा आवाज उठाई है regarding the NC and whether it is sincere about holding elections, but basically होता ये है, how this whole thing works is
फीफा एनसी अपॉइंट करती है, फीफा एएफसी उसके साथ काम करती है। फीफा ने पहले जो मेंबर एसोसिएशन ऑफिसर पाकिस्तान को देख रहे थे वो एलेक्स ग्रॉस थे। आफ्टर एलेक्स लेफ्ट they put Laura Dijak on the Pakistan case. Laura, from what I've heard and learned, is कि वो कभी स्विट्जरलैंड से बाहर नहीं गई, तो she didn't know how to handle a case like Pakistan. And she's now moved on to the academy, and Rolf Tanner, the head of MA governance, is now looking at Pakistan. So that change in terms of FIFA, AFC के जो लोग हैं वो जब से लगी है वो वही सेम ही है। तो and AFC has, I mean, this is like from what I felt in my conversations with the AFC in Doha and AFC people in Doha, I mean, they're not happy at the NC's progress and the way the NC is making progress. मेरी AFC के जो deputy secretary general है वहीद करदानी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, and I asked him, he said we are backing the NC, but our funding will only come when the new elected PFF comes in. And AFC programs will only begin when the elected PFF comes in. They also want an election. Right. So the overriding feeling in all of this is that, I mean, it's been over a year. I mean, अब तो 14 महीने होने वाले हैं. Yeah. And we're still there in the same situation when the takeover took place. So I mean FIFA को अगर वो NC change करती है, it has to be smart and know who are the people जो उनको रखने चाहिए NC में, because so far it's been very disappointing, both the NCs from the first. So इसके अंदर मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो ये है कि फिर एनसी और जो हारून मलिक हैं, व्हाट्स देयर प्ले लाइक, लेट मी एलैबोरेट के स्टेक होल्डर्स जो आपके लोकल हैं वो भी चाह रही हैं इलेक्शन फौरी तौर पे हो, ठीक है, आपकी एएफसी भी ये कह रही है, पुश कर रही है इलेक्शंस हो, फीफा भी आहिस्ता आहिस्ता एज टाइम पासेस ऑन देयर सपोर्ट सीम्स टू बी, मतलब वो कम होती जा रही है, और वो भी ऑब्वियसली विद उन पे भी प्रेशर आएगा कि अपनी एनसी को कहो कि इलेक्शन करवाएं। लेकिन एट द सेम टाइम इस सब के बावजूद एनसी की तरफ से, जिस तरह फैसल सालेहात कह रहे थे, उनकी प्रिडिक्ट में उनकी जो भी सोच है कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, और इनकी तरफ से भी इलेक्शन की तरफ कुछ कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी अभी तक नजर नहीं आ रही। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, उनको क्या लगता है कि किधर बात जाएगी, हाउ आर दे प्लेइंग दिस? Yeah, I have spoken a lot and asked a lot, but I always get those same generic replies. So it is very difficult to. But what do you think? एक तो है ना कि आप उनसे पूछ रहे हैं, आपके अपने ख्याल में what do you think is happening, क्योंकि आप obviously इस पूरी इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो I want to get your analysis on it कि आपके ख्याल में किधर बात जा रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि it doesn't make much sense. मैंने कुछ अरसे पहले कुछ लोगों से ये सुना था कि जीएसवी जो फ्रेंचाइज लीग करा रही थी उन्होंने एनसी से डील कर ली है। तो बेसिकली I think now everybody like the NC would want to stay and get the league done. Yeah, but so इस बहुत अजीब बात है, क्योंकि अगर वो इसी तरह लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाय फीफा, एनसी की तरफ से भी साइलेंस, और फिर एकदम से वो बस एंड पे कहें कि हम ये फ्रेंचाइज लीग को बैक कर रहे हैं, जो भी करें, तो इट्स नॉट गोइंग टू प्ले आउट। वो तो फिर एक और टेक ओवर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, और फिर अगर मामला और बिगड़ा तो फीफा ने इस दफा या तो एनसी बदल देनी है, कहना है कि भाई जो भी आ रहा है वो महीने के अंदर इलेक्शन करवानी सिर्फ आ रहा है और किसी चीज के लिए नहीं आ रहा, तो मामला तो बस बिगड़नी है इसके बाद। यार मामला हमारे असल में ना इस्माइल, व्हाट्स हैपेंड इज के मामला हमारे 2015 से बिगड़े हुए हैं। यस, और FIFA ने जो इतना टाइम लगाया ना टू गेट द एनसी, it kind of worsened everything up and it made a whole it made an almighty mess of Pakistan football in a lot of different ways कि जी आपके पास अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा जी कि इलेक्शन आपने कौन से उससे कराना है, कौन सी कांग्रेस से करवाना है,
2011 की कांग्रेस से कराना है, 2015 की कांग्रेस से कराना है. I mean, all those things. I mean, it is so messed up right now. मतलब जो सोच है कि जी क्या करना है, किस तरह होना है, and there is no clarity. So, I mean, NC has been very brave to give an 8-month mandate, and I personally I don't see that happening even after the ban के वो 8 months में election करा दें. सही है, सही है. तो आपके ख्याल में जस्ट लास्टली, इफ यू वर टू, अगर आप अगला मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है अगले साल में क्या होगा, जो आने वाला साल है उसको ऑब्वियसली आपने बता दिया कि वो इलेक्शन आपको नहीं लगता कि 8 महीने में कराएंगे, तो आपको अगला साल कैसे प्ले आउट करता हुआ नजर आता है सारे स्टेक होल्डर्स को अगर हम देखें? Yeah, I personally what I hope is that the NC gets everything back, the accounts and everything. And what I hope is we see an NC which is more, मतलब NC अगर change ना भी हो, the members are more like focused towards getting this election done and over with. If it does not happen, then the situation is going to prolong, and the more it prolongs, वो जो uncertainty रहती है पाकिस्तान फुटबॉल पे, आप कोई long term development plan कर नहीं सकते. Yeah. NC might have plans and NC might have brilliant plans, but problem is that you have a mandate, and that is the mandate जिसमें आपको भाई election करवाने हैं. Long term development plans के लिए I mean you need an elected PFF. Until that happens, so आपकी development कुछ वैसी हो नहीं सकती, because even if the NC let's say कि उनके जो development plans हैं वो start भी हो जाते हैं, but whenever the elected government, elected PFF comes in, so it will have its own set of ideas on how to run football. So all those plans are going to go to waste. Yeah. So basically, I mean, see, the only solution right now is either FIFA comes in and says that okay, everything done, we are going to have an NC that is going to stay on and do this and do that, or FIFA comes in and says okay, we're going to get this election done and then we're out of it. Yeah. So yeah, so basically अब इस चीज का इंतजार है, अब देखें क्या होता है. Yeah, for sure. Umaid bhai, thank you so much once again for taking out the time and coming on the show. आप हमारे मेन जो हैं वो समझ ले source of news and analysis हैं about all of this. तो I really appreciate you always coming on. और मैं आपको बार बार तंग करता ही रहूँगा over the coming months and years, क्योंकि वैसे तो ये मामला अभी लग नहीं रहा कि कहीं पे ठीक होंगे. But everyone, I hope you enjoyed the episode. Do check out Umaid Bhai's article and do follow him on Twitter and follow all the pieces that he puts out and all the tweets that he does, because he is the one-stop shop for Pakistani football news and analysis. This has been Pressing Matters, brought to you by On the Mic. I've been Ismail Farouk. This has been Umaid Wasim. Until next time, take it easy.